ऐसा भी होगा पहाड़ पानी के नहीं पिघले, बर्फ के साथ बर्फ के पास का बर्फ। Yes, there will be some movement and those polar ice caps will start to melt. ये सिर्फ इधर बर्फ नहीं है ना, वो तो हिमालय की तरफ भी बर्फ है ना, रशिया में, चाइना में, उधर भी बर्फ है ना। So there's no ice around here, but there is plenty around the Himalayas in China and Russia. इधर है ना तो ग्रीनलैंड में बर्फ पहाड़ जो है ना पिघल रहे इसी का हैं। तस्करा करें इसका। वो ग्रीनलैंड पहाड़ जैसा ग्रीनलैंड में पिघल रहे हैं ना, इसी तरह चाइना रशिया में पिघल रहे हैं। Just as they're melting towards Greenland and above, they'll start to melt towards China and the Himalayas, which means that the polar ice caps will start to melt and there will be movement also. तो सारी जमीन हिलेगी उसके साथ। जमीन उसके ऊपर है, पानी के ऊपर है, नीचे पानी है ना, इसके ऊपर जमीन रखी हुई है, जिस तरह कश्ती नहीं रखी हुई है, तो कश्ती को बैलेंस करने के लिए वो ईंटें वींटें रख लेते हैं ना, इसी तरह जमीन को बैलेंस करने के लिए पहाड़ बनाए हुए हैं। As I'm saying, the whole earth is composed of water, and then on the water is the land. And just as you balance a boat on water, God has placed mountains in various places to balance the land. उसका सवाल ये था कि क्या उस सारी जमीन और जमीन के अंदर का हिस्सा और पानी हरकत में आ जाएगा, सारा हिल जाएगा? नहीं, वो जमीन पानी जमीन के ऊपर ही आ जाएगा। As I'm saying that not so much as the movement of the earth itself, but all the water will rise and just all the lands will be submerged. I had heard that there was this shift would change our dimension from the third to the fourth dimension. Yes. Be more precise, but I don't know what. Well, we're living in the third dimension right now. Right. And from what I have heard is the rumors that when this shift takes place, that everybody will be put into the fourth dimension. Could I understand that as when this change occurs, the whole world will finish and cease to exist? Then it will exist in another dimension? Yes. सरकार ये पूछ रही है कि ये हमने सुना है, पढ़ा भी है, जब ये तमाम की हरकत होगी, पानी उभरेगा और क़यामत वगैरह, जंग अज़ीम 3, उसके बाद तमाम इंसानियत तीसरे से चौथे डायमेंशन में यानी किसी और आलम में चली जाएगी। यही रहेगी। कोशिश कर रहे हैं कि उससे पहले लोगों को चांद पे बसा लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकेगा। No, they will all remain here. They won't be fourth dimension. There are people who are trying to make the moon inhabitable so people can actually move there before it happens. But everybody will remain here and be, in fact, be the subject of that destruction. I have to ask a question about the saints. There are certain saints that if you visit their gravesite, you have a question in your heart, it'll be answered. Thinking of like Nirvana Jalani Rumi and Jalani and Hafiz and some other holy people. Is it possible, like through prayer, even if you're not at their gravesite, to commune with these people and get answers? सरकारी पूछ रही है क्या ये मुमकिन है कि कुछ मज़ारों पे जब आप जाते हैं, मौलाना रूम का इन्होंने तस्करा किया, गौस पाक का और एक और मज़ार, तो आप जाएँ तो उनसे गुफ्तगू हो सकती है, अगर कोई सवाल हो, आपकी कोई हाजत हो तो वो कबूल करते हैं। और क्या ये भी मुमकिन है कि अगर मज़ार पर ना हो, दूर हो, कोई ऐसा तरीका है, कोई अमल है या कोई दुआ है जिसके ज़रिए से वो आपकी हाजत या दुआ सुन लें और कबूल कर लें? पहले इन लोगों से मिलने के लिए बात अपने अंदर पावर आएगा ना, नूर की पावर आ जाए, पहले तो ये है। The first thing that we have to develop that power inside us, the power of that light, and then it is possible to do that, but that's what we have to do first. फिर एक अमल होता है शुरू मुज़म्मल का, वो 5 दिन पढ़ते हैं, 200 दफ़ा रोज़ पढ़ते हैं, फिर उसका अमल बन जाता है। Then there is a chapter from the Holy Quran which is known as Surah Muzammil. Shah Sahib said that we have to read that for 5 days, 200 times a day, that you obtain power over this verse and its qualities are contained then inside you. फिर जिस मज़ार पे जाएगा ना, अगर मज़ार वाले सामने ही नहीं है ना, तो उस अमल के ज़रिए ज़बरदस्ती ये उसको बुला लेगा ना। Then when you go to a tomb after you practice this, and then the inhabitant of the tomb, the saint, does not come before you, then actually you can close your eyes and then through that power you received, through this practice, you will be able to force the saint to appear before you.
फिर वो कितना भी बड़ा वली होगा ना, तो उसके जरिए उसको आना पड़ेगा इसके पास. But then no matter how powerful or mighty the saint is, through that action that you did, the recital and the power that you got as a result of that, that saint will have to appear before you. Which That's known as Surah Muzammal. That is a chapter from in the Holy Quran. It's a few verses that you have to recite that for 5 days, 200 times a day, and that what is contained inside it, the light that is created, the esoteric and mystical dimension that has behind it, becomes basically within your power. उसके लिए इजाजत देने वाला भी वली हो ना, पीछे हाथ भी वली का हो, तब कामयाबी है. And it is not sufficient just to take the chapter and verse and read it, but this has to be given from a saint. He has to permit you to do this, so that when you do it, he'll be watching over you and his hand will be over you and protect you in this way. इसी तरह एक और अमल है, उससे आगे है, वो जंगल में बैठ के पढ़ते हैं, कब्र बनाते हैं, जिस नबी की बनाते हैं ना, उस नबी को आना पड़ता है ना. Then there is another action that we can do. For that you have to go to the jungle, and in a similar way to reading that chapter and verse, in the jungle we make a sort of imaginary grave of any prophet, and through capturing the essence of those verses, we are then able to call upon that prophet and let him pray before us. उनके लिए फिर अपने अंदर भी पावर होनी चाहिए. But in order to do this and to achieve this, we need to have this power inside of this light. उसको इस्म आज़म भी बोलता है, लेकिन जिस्म आज़म होता है तब इस्म आज़म के काबिल होता है. That is also known as Ism Azam, the mighty and the majestic name of the Lord, and which is the pure name. And to receive the pure name, we have to have pure body also, for the pure name to come inside us. Surely by that time you could get your answer from God instead of trying to force Saint or the Prophet. मैं पूछ रही कि क्या उससे पहले कि आपको वली या नबी को जवाब दें किसी सवाल का, क्या उससे पहले इतना जल्दी अल्लाह आपको जवाब ना दे सवाल का इन बीच में बगैर उन वसीलों के? नहीं, तो उसने वसीला रखा हुआ, बगैर वसीले के नबी ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए थे, लेकिन बाकियों के लिए तो वसीला है ना. Sarkar replied that this is the law of God, this is the way He does things, that He has created intermediaries for us. It was only Jesus that came into this world without the interaction or the help of Father, so to speak. For the rest of us, we do need a go-between. इस तरह किसी किसी के साथ अल्लाह कर भी सकता है, लेकिन बाकी सब लिए एक वसीला ना ये लोग. For some people, God may choose to do that. Before the saint or the prophet replies, or before you may to be direct and say, "Here, I'm God, and this is your answer." But for most of us, we see that practically this is the way we have to have a go-between. ये उसका कानून है ना, उसका आम कानून This है. is his law. This is his common law that we have to have a teacher, a guide, or some person acting between us and God. कई लोग अरसे से जंगलों में बैठे रहते हैं अल्लाह को ढूंढने के लिए, अल्लाह नहीं मिलता. तो मूसा अलैहिस्सलाम आग लेने के लिए गए तो अल्लाह उनको मिल गया. Some people spend their entire lives searching for God, and they go to jungles and try to find God. And same example, Zakar decided this morning. Moses went to find some wood for the fire. They went for the wood, they found God. अल्लाह ने बात करी कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ, डरो नहीं, आ जाओ इधर. God spoke to Moses and said that I'm your Lord, don't fear me, come here. लेकिन सिर्फ मूसा से किया ना, बाकी लोगों से नहीं किया. But he only did this with Moses, not with everybody. Well, I'd like to ask if it is possible for a person who practices faithfully and diligently to come into union. To come into union, Yes. practices what? Saying Allah in the heart and purifying myself. Right, and achieve union with God. Yeah. सारी पूछ रहे हैं क्या ये तय दिल से और मेहनत के साथ और कोशिश के साथ अल्लाह अगर की जाए दिल से तो अल्लाह के साथ इंसान एक हो सकता है, दीदार में वसल हो सकता है. जब तक वो नहीं चाहे.
until it is